morning to you all. Mu Robin Goro. I will be teaching you strength of material. It is mechanical or civil engineering a very important subject. In this subject, which is also referred as, which its name is strength of material. It is sometimes also referred as material of strength or mechanics of material. In this chapter, we will mainly deal with different properties of a material and how they behave in different situations. Why is it important for civil and mechanical engineering? ना कहीं की important अच्छे हमें यदि notice करिए रहते हैं, हमें भावो different types of structure बनाऊँ भावो building बनाऊँ किंबा हमें mechanical department हिसाब लेके आने बड़ा बड़ा जो crane जाता है, how it is handling different kind of load, how is it failing in different situations or not. To deal with all those things, we are reading this subject, that is strength of material. Prior to starting this subject, I would like to recall the force, means what is force, and mainly two different kind of forces which you have studied in the junior classes. So force, which is also denoted with capital letter F. What is its unit? Its unit is Newton. N-E-W-T-O-N, Newton. Okay. So in your junior classes, you have studied different kind of forces like planar force, coplanar force, and different kind of forces. But to study this chapter, you mainly require two different kind of forces. First is tensile force. Another is compressive force. Okay. Now starting with what is tensile force? Now starting with what is tensile force? Prior to knowing what is tensile force, we should know what is tensor, because this word tensile force is derived from an English word tension. Tension means when we elongate something, it stretches out. Say कोई भी मटेरियल को हमें जब झिंकू जो फोर्स देंगे हमें झिंकू जो से स्ट्रेच हो जाए, जो स्ट्रेच्ड स्टेट ऑफ ए मटेरियल अच्छे से ना हमें वो टेंशन. तो भावो सामने गोटे बॉल अच्छे बॉल रे गोटे रॉड फिक्स होके रही आपण रॉड को झिकी केते कि 5 न्यूटन फोर्स रे झिकी तो से कोन करू इलोंगेट हो न्यूटन्स का थर्ड लॉ एडी एप्लीकेबल हो ये पटे भी 5 न्यूटन एक्ट करिवो और ये मटेरियल इलोंगेट हो एडा होची टेंसाइल फोर्स. एट द सेम टाइम कंप्रेशन में आप कौन जानी छथि भला कंप्रेशन मींस वो भी मटेरियल रो गोटे डायमेंशन को किंबा देडा कि तीनटा जब डायमेंशन को हमें जब शॉर्टनिंग करछु माने छोटो करछु प्रेस करिए सेडा को है कंप्रेशन. तो ये जो फोर्स रो डायरेक्शन अछि हमें यदि चेंज करबा बाबा ये इलोंगेट आगे बाहर उठो हमें भीतर को जब फोर्स अप्लाई करछु तो न्यूटन से थर्ड लॉ एडी एप्लीकेबल हो से कंप्रेस ये जेडा जो मेन टाइप ऑफ फोर्सेस अच्छे टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स से जेडा ये चैप्टर में मेन प्रीरिक्विजिट है एडा हमें डिस्कस कर देते एबे हमें ये चैप्टर को बेसिक को स्टार्ट करें. सो द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज स्ट्रेस. दिस इज द फर्स्ट topic in this chapter. Okay. Stress. What do you mean by stress? Stress means resistive force per unit area. We have discussed what is force and two types of force. तो जब हमें force को भी उनके मटेरियल ऊपर अप्लाई करूँ भाव एडी आप एडा को झिंकी लो
For example, this is a duster. A duster को मुझे झिकिया को ट्राई करो. Okay. So it is called what is happening here? Along its length, I am trying to elongate it. So what is happening? Along the length, I am trying to apply some x Newton force, and according to Newton's third law, here also x Newton force is acting. But is it acting along a particular line or along the whole area? It is acting along the whole surface area. Means एटा जदि आपण डस्टर रो लेंथ अछि एपट साइड आपण जदि आके ताको 90 डिग्री रोटेट कर देबे एडी तार क्रॉस सेक्शनल एरिया आसे एटा कोन तार वेट एटा हाइट एंड द force of pull is acting along the whole surface area. Okay, the definition of stress होची आको हमें जदि रोटेट कर दबा 90 डिग्री एटा होबो तार हाइट एटा होबो तार वेट करेक्ट एंड दिस x न्यूटन फोर्स लेट इट चलो अब एटा को नो 8 न्यूटन फोर्स. ओके, a 8 न्यूटन फोर्स act kocha along its this area. Okay, so stress means resistive force जोड़ा generate होको ये body भितर divided by area. Okay, cross sectional area एटा अछि तार लेंथ ताको छाडी कि तार जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बचेला माने एटा लेंथ अछि हमें वेट तो हाइट हिसाब से जो एरिया नो से एरिया है केती की फोर्स एक्ट होची पर यूनिट एरिया. ओके, तो हमें एटा केमिति कैलकुलेट करबा हमें कैलकुलेट करिया स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया. एटा को फोर्स रेसिस्टिव फोर्स divided by unit area. Okay, good. Resistive force divided by area. ठीक अछि, तार डायमेंशन कोन आसी तो जूनियर क्लास में पढ़ी छो फोर्स रो डायमेंशन कोन न्यूटन करेक्ट. एरिया रो डायमेंशन कोन मीटर स्क्वायर. लेंथ रो डायमेंशन होला मीटर. लेंथ इनटू लेंथ होची एरिया करेक्ट. डायमेंशन कोन मीटर स्क्वायर. ओके, तो ये स्ट्रेस कोन होची रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट. और जेमिति फोर्स को हमर दे प्रकार रखबा स्ट्रेस इज आल्सो ऑफ डिफरेंट काइंड. According to dimension, we classify it as 1 dimension, 2 dimension, and 3 dimension. Okay. So here, students, see, in 1 dimension, we have mainly 2 kind of stress. First is tensile stress, another is compressive stress. Okay, in 2 dimension we have shear stress. Okay, and at last in 3 dimension we have volumetric stress, which is also referred as volume stress. Okay, now going towards tensile stress. So as you have heard what is tensile force, so tensile stress also derived its definition from the same word or the same definition. Or if a stress is generated inside a body due to tensile force,
that is known as tensile stress. Okay, that means if I am pulling a body, मो जदि गोटे बॉडी को झिकुची से कोन करियो ए जो पुल होची ए बॉडी रे ता जुगुरु ए बॉडी भितर जति की भी स्ट्रेस जनरेट हो सेडा को हमें कहबो टेंसाइल स्ट्रेस। आउ बॉडी को जदि हमें कंप्रेस करियो, कंप्रेस वेले मो भीतर को जदि पुश करनी तो ता जो स्ट्रेस जनरेट हो सेडा होची कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, बाकी फर्दर हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़िया, आज रो डेमो क्लास में एति